Hello everyone. Welcome back to our English online class. In my previous class, I taught you how to write cursive capital letters K and L. I hope everyone have learned it. Did you finish your homework? Yes or no? Yes, very good. Today I will teach you how to write cursive capital letters M and N. Let us start. First we will recognize the letters and pictures. Date 12 May 2021. CW cursive capital letters M and N. This is cursive capital letter M. Which letter is this? This is cursive capital letter M. M for mango. M for mango. M for monkey. M for mug. M for man. M for mango. Mango means आम. मैंगो सिर्फ स्वीट फूड, ये एक अच्छा फ्रूट्स होते, फल होता है, आप सबको मालूम है. देन मंगी इट्स एन एनिमल, वी सी दम ऑल अराउंड अस, ये एक जानवर होता है, हम हमारा आसपास देख सकता है. मंगी मीन्स बंदर. देन एम फोर मग. एम फोर मग. मग आप सबको पता है, वी यूज इट अवर डेली हाउस होल्ड पर्पसेस, हम अपना घर का काम में ये मग हम यूज करते हैं. एम फोर मैन. एम फोर मैन. मैन इज ए ग्रोन अप पर्सन, लुक लाइक आवर चाचा, पापा, अंकल. अंकल का पापा की तरह ग्रोन अप पर्सन को हम मैन कहते हैं. देन नेक्स्ट लेटर एन. Which letter is this? Cursive capital letter N. N for nest. N for nest. Nest means house of bird. चिड़िया का घर होता है. घोंसला. Nest means घोंसला. N for net. Net means जाल. N for nurse. N for nurse. Who is nurse? Nurse the person who take care for the sick people. बीमार लोगों को देखभाल करने वालों को हम नर्स कहते हैं. टुडे इज इंटरनेशनल नर्स डे. यू नो टुडे इज इंटरनेशनल नर्स डे. नर्स के सम्मान करने के लिए आज हमारा पूरा देश इंटरनेशनल नर्स डे मनाता है. देन नेक्स्ट एन फॉर नोज. एन फॉर नोज. इट्स पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी थ्रू विच वी स्मेल. हम सूंघने के लिए नोज यूज करते. नोज मीन्स नाक. वंस अगेन एम फॉर मैंगो. एम फॉर मंगी. एम फॉर मग. एम फॉर मैन. विच लेटर इज दिस? लेटर एन. एन फॉर नेस्ट. एन फॉर नेट. एन फॉर नीड्स. एन फॉर नोज. Children, let us open your notebook and write with me. First of all, write the date 12 May 2021. CW cursive capital letters M and N. First we will revise the letters K and L. First step, second step, third step and fourth step. K. First step, second step, third step and fourth step. K for kite. K for key. K for king. Now we will revise the letter L. Keep your pencil on the second line. First step, second step, third step and fourth step. L. Start from the second line. First step, second step, third step and fourth step. L. L for lion. L for lemon.
Now I will teach you how to write cursive capital letter M. Which letter is this? This is cursive capital letter M. You have to put your pencil just on the third line. आपको third line का just ऊपर रखना है. And make a little curve like this. इसी तरह एक curve बनाना है. And go up to the top line and bring it down to the third line. Again go to the top line and bring it down to the third line with a curve M. First step, second step, third step and fourth step M. आपको थर्ड लाइन की थोड़ा सा ऊपर रखे एक कर्व बनाना लाइक दिस. फिर इसको ऊपर फर्स्ट लाइन तक ले जाना है, उधर से नीचे थर्ड लाइन तक लेकर आना है. फिर दोबारा आपको ऊपर लाइन तक लेकर आना है, फिर नीचे लेकर आके थर्ड लाइन तक आके अंदर को मोड़ना है. मेक ए कर्व लाइक दिस and go up to the top line and bring it down to the third line and again go up to the top line and bring it down to the third line with a curve. First step, second step, third step and fourth step. M for mango. Once more. First step, second step, third step and fourth step. First step, second step, third step and fourth step M. First step, second step, third step and fourth step. पहले आपको एक छोटा सा घर बना के उसको ऊपर लाइन तक ले जाने, उधर से नीचे थर्ड लाइन तक वापस आने, फिर दोबारा आपको ऊपर लाइन तक ले जाने, उधर से दोबारा आपको थर्ड लाइन तक ले जाके अंदर को मोड़ना. ये M. M for monkey. Once again, draw a small curve like this and go up to the top line and bring it down to the third line and again go up to the top line and bring it down to the third line with a curve. First step, second step, third step and fourth step M. First step, second step, third step and fourth step M. First step, second step, third step and fourth step M for man. First step, second step, third step and fourth step. Now I will teach you how to write cursive capital letter N. Children, since we have learned letter M, it will be easier to learn letter N. हमने अभी M learn किया है, अगर M learn किया तो N भी easy हो जाता है. Which letter is this? This is cursive capital letter N. You have to put your pencil just on the third line and make a curve like this and go up to the top line and bring it down to the third line and again go up to the top line with a curve N. First step, second step and third step N. First step, second step and third step N. First step, second step and third step N for next two. Once more, पहले आपको M लिखने के लिए हमने पहले क्या किया था, एक कर्व बना के फर्स्ट लाइन तक लेकर गए, फिर इसको हम थर्ड लाइन तक लेकर आ गया,
फिर दोबारा उसको फर्स्ट लाइन ले जाके आगे को कर्व घुमाना है N. फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप and third step N. First step, second step and third step N4 nest, N4 net, N4 nurse. Once more children, make a curve like this and go up to the top line and bring it down to the third line and again go up to the top line with a curve. पहले आपको कर्व बना के ऊपर जाने, फिर नीचे थर्ड लाइन लगा के दोबारा और टॉप लाइन जाके एक कर्व बनाना है. ड्रॉ ए कर्व लाइक दिस and go up to the top line and bring it down to the third line. Again go to the top line with a curve N. First step, second step and third step N. First step, second step and third step N. Children, tell me which letter is this? Cursive capital letter K. Repeat after me. Cursive. This is cursive capital letter K. This is cursive capital letter L. This is cursive capital letter M. This is cursive capital letter N. You have to do this work in your notebook. I hope everyone have understood. Children, take care. Stay home. Thank you.